Hello guys, welcome to iTutor. Hope you all are doing well and preparing well. And today we will start the continuous topic of last video, staff agency, structure and forms of organization in public administration. Hope you followed the last video, line agency, and today we will discuss about the staff agency. And the last we will compare both, and we will see the relationship between line agency and staff agency also. Okay, and last video I got one comment from my follower. So she already recommended to you same day, just upload the video. So sorry for the delay. Today we will follow, and because I just divide the two topic in two videos, because of you just thoroughly go to these two topics because it's very important. Anyway, two or three questions you can expect from this side, staff agency and line agency. Maybe it's comparisons of, so prepare thoroughly. Okay. And it's very simple topic also. Nothing, I think it's very simple, because nothing, even my slides also I prepared for simple words only, so you can follow simply and study well. Okay, today we will start. What is, first of all we will see what is staff agency. Yesterday we saw what is line agency. It's a primary functional agency was that line agency, and it directly connected to the customers or citizens. And today we will see staff agency. Okay, hope you remember all the points of line agency we discussed last video. Okay, and you just follow this video with the line with the mind of line agency also. Okay, and the term staff has been borrowed from the military terminology. Okay, so it's a term kahan se aaya staff. It's from military terminology. With the growth of the size and function of the armies, the field commanders felt the need of specialized services. Okay, so army, army wing is very vast, and उसके लिए वो लोग एक word भी use किया है for the dividing their staff, and this is staff term coming from the military terminology. It led to the formation of the general staff with subsidiary staff agencies under them. With the growth of the large corporation, particularly in the United States, the need was felt to adopt a system similar to the army staff. The system was first started in the private business management, and later on was introduced in the field of government organization. So ये staff वाला ये word or staff वाला system first coming in private business management, and then later on government organization adapted that word. Commonly, staff activities are mainly concerned with advising, planning, budgeting, personal public reporting and public relation. Of course it's very simple. One organization में एक staff क्या करते हैं, तो उसका प्लानिंग करते हैं, उसके लिए एडवाइस देते हैं, एंड वो प्रिपेयर करते हैं, फाइनेंस प्रिपेयर, उसके लिए सेपरेट डिपार्टमेंट भी होगा, एंड पर्सनल एंड पब्लिक रिपोर्टिंग करते हैं, पब्लिक रिलेशन को मेंटेन करते हैं. स्टाफ इज सच एक्चुअली इट्स ए supporting system of one organization, right? This staff includes all those persons who are engaged in acquiring knowledge, providing information, undertaking planning function, and advising on possible courses of action, thereby rendering valuable assistance and support to the line agencies. So staff agency का main function क्या है? Support line agencies. जो adequate information देना, उन लोगों का line agency क्या है? It's authority, right? उन लोगों के पास command power है. We already saw the last video. Line agency के पास command power है. They command, they make law and order and all things. Okay, they directly involved with the people, and it's a primary function they handle. And here in the case of staff agency, they support the line agency. Main function of the staff agency is to they support them for their planning, implementation, budgeting, personnel and public relations, and all the supports provided through staff for the line agency's functioning. And Luther Gulick was one of the main
follow main author and has divided the function of staff agencies into three categories. So वो गुल्ली कैसे divide किया है function of the staff agencies. One is categories of knowing and one is thinking and another one is planning. एक उन लोगों को पता चलना चाहिए स्टाफ का मेन रोल क्या है, मैटर के बारे में पता करना चाहिए, नोइंग, एंड देन उसके बारे में, वो मैटर के बारे में, वट एवर द ऑर्गेनाइजेशन एक टॉपिक होगा उसके बारे में जानना चाहिए, देन उसके बारे में थिंकिंग करना चाहिए, सोचना चाहिए, देन वो प्लान करना चाहिए, देन इम्प्लीमेंट एंड कमांड कौन कर रही है, लाइन एजेंसीज कर रही है. ओके, सो होप यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ स्टाफ एजेंसी बेसिकली. Now we will see the nature of staff agency. One is staff agencies perform secondary function in the administration. So primary function we already saw in the last video. Line agencies perform the primary function. So staff agencies perform the secondary function. Staff agencies perform some secondary functions. The role of staff agencies is so supportive and advisory in nature. So mainly उन लोगों का nature क्या है, उन लोगों का supportive and advisory nature है staff agency का. Staff is like a stick which help in walking. एक इंसान, एक इंडिविजुअल वॉक कर रही है तो वो क्या है, उसके लिए क्या चाहिए, एक स्टिक इज़ वन ऑफ द मेन इम्पोर्टेंट चीज़, सपोर्टिंग चीज़ फॉर आर वॉकिंग. सो दैट इज़ लाइक स्टाफ एजेंसी for the line agency. Okay, staff agencies, and second one is staff agencies do not exercise authority and command. उन लोगों के पास कोई authority नहीं है, command नहीं है, they only advise and support. Okay, staff agencies do not directly exercise authority and command, they advise the line in making decision. line agency को decision making करने के लिए एक advice कौन दे रही है, staff agencies दे रही है. the line executes the decision and act. ये support and advisory को एक डिसीजन एंड एक्ट में कौन लेके आ रही है, लाइन एजेंसीज. द स्टाफ एक्सरसाइज इन्फ्लुएंस एंड कैन एडवाइस. ओके, and third one is staff agencies do not have the executive responsibilities. पूरा execution किसके पास है, line agency के पास है. in administration staff agencies are only to help and assist the chief executive in its work. Okay, these are not directly responsible for the performance of the executive. staff agencies remain and work behind the scene. So always ये main पोर्शन में नहीं आएगा, ऑलवेज ये बैकग्राउंड में काम करते हैं, राइट. एंड इसलिए क्या है, सिटीजन और कस्टमर्स के साथ इन लोगों का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट स्टाफ एजेंसीज को नहीं होगा. द स्टाफ एजेंसीज रिमेन एंड वर्क बिहाइंड द सीन. दे कैनॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द सक्सेस और फेलियर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. ओके, सो दे कैनॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, तो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा सक्सेस या फेलियर ऑफ एक एडमिनिस्ट्रेशन का. रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास नहीं है, स्टाफ एजेंसी के पास नहीं है. स्टाफ एजेंसीज, एंड फोर्थ वन इज स्टाफ एजेंसीज डू नॉट डायरेक्टली डील विद द पीपल. ओके, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, राइट. द लाइन एजेंसीज डायरेक्टली डील विद द पीपल एंड सर्व दम, एंड द स्टाफ एजेंसीज प्रोवाइड सर्विस टू द लाइन एजेंसी. दे help assist and advise the line agencies and remain behind the scene. Always ये काम करते हैं कहाँ पे, बैकग्राउंड पे काम करते हैं स्टाफ एजेंसीज. देन ये सिटीजन के पास कौन आ रही है, लाइन एजेंसीज. ओके, द स्टाफ एजेंसीज डू नॉट डायरेक्टली डील विद द पीपल, सो दैट. And the last one is outside the line of command. Staff agency कहाँ पे है, outside the line of command है. Staff agencies do not enjoy the power to command and control. They however do indirectly influence the exercise of command and control powers by the chief executive. Okay, and कौन सा टाइप होगा, टाइप ऑफ स्टाफ एजेंसीज. एंड वी ऑलरेडी डिस्कस द नेचर ऑफ लाइन एजेंसीज एंड द टाइप ऑफ लाइन एजेंसीज इन लास्ट वीडियो. प्लीज फॉलो दैट. एंड अकॉर्डिंग टू पिफिनर there are three kind of staff agencies. These are general staff. Remember these three types of staff agencies. One is general staff होते हैं. क्या होते हैं general staff? The general staff is there to help the chief executive in the performance of its administrative duties. It advise, collect facts and place before the cabinet important matter of decision. So
पूरा एक एडमिनिस्ट्रेशन का सपोर्ट दे रही है पूरा, बिकॉज वो एडवाइसेस देते हैं, मैटर को कलेक्ट करते हैं एंड ये क्या होता है कैबिनेट में फाइनली सबमिट करते हैं एंड उसके बाद डिसीजन वगैरह कौन ले रहे हैं, लाइन्स एजेंसीज आर टेकिंग द डिसीजंस. ओके, एंड नेक्स्ट वन इज टेक्निकल स्टाफ. जनरल स्टाफ होते हैं एंड टेक्निकल स्टाफ होते हैं. द चीफ एग्जीक्यूटिव हैज ऑल्सो टू डील विद मेनी टेक्निकल प्रॉब्लम्स in the administration. Okay, nowadays technologies are very important in all the organizations. So the administration or the head of the administration needed lots of technical help from the staff. The chief executive therefore keeps certain technical staff officers like engineers, financial expert, etc., who give all sort of technical advices, and the chief executive is assisted by technical expert and their advice is invaluable in the field of their specialization. Of course, एक अभी एक प्रॉब्लम आ गया, कंप्यूटर काम कराना है तो उसके लिए एक स्पेशलाइज्ड स्टाफ चाहिए एंड फाइनेंस डील करने के लिए उसके लिए भी स्पेशलाइज्ड क्वालिफाइड पर्सन्स चाहिए, राइट. तो दे सपोर्ट द हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू देयर स्पेशलाइज्ड एजुकेशन और स्पेशलाइज्ड फील्ड, राइट. एंड ऑक्सिलरी स्टाफ क्या होता है, दे आर सेपरेटेड एजेंसीज क्रिएटेड टू अकम्प्लिश द कॉमन एक्टिविटीज ऑफ ऑल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स. सारे कॉमन एक्टिविटीज़ को ये क्या करते हैं, ऑक्सिलरी स्टाफ कंट्रोल करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ऑक्सिलरी स्टाफ परफॉर्म हाउस कीपिंग फंक्शंस विच आर कॉमन इन ऑल द डिपार्टमेंट, राइट. सो मे बी क्लीनिंग होगा, हाउस कीपिंग होगा, पीयून्स लाइक पीयून्स आर फॉर टी टाइम में टी दे रहे हैं एंड फाइल्स किसी को चाहिए तो एक कैबिन से दूसरा कैबिन में दे रही है, तो एक हाउस कीपिंग लाइक काम दे आर डूइंग ऑक्सिलरी स्टाफ. ओके, होप यू क्लियर द टाइप ऑफ स्टाफ एजेंसीज. Now we will see the relationship between line and the staff agencies. Of course, they are functioning parallelly, right? So they have one relationship. Then only one administration success hoga. अकेले line agency can't work. अकेले staff agency can't work. Staff agency is a secondary agency and line agency is a primary agency. So both secondary and primary agency work together. Then only the citizens will get the result. Okay. The staff units within the organization do not run parallel to or independently of the line hierarchy, right. We already, now I told you they can't work independently but are closely attached to it. दोनों क्लोजली काम करते हैं, तो एक ही को इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर सकते, राइट. स्ट्रक्चरली देयरफॉर द ऑर्गेनाइजेशन रिमेन ए सिंगल एंड यूनिफाइड यूनिट. एक ऑर्गेनाइजेशन कैसे होते हैं, लाइन प्लस स्टाफ पूरा एक यूनिट होता है, राइट. द स्टाफ यूनिट्स आर इट्स partners attached to the various levels of the line hierarchy as required. Gradation of the staff structure where they exist follow the line gradation to which they closely stick. It is therefore the clear from the above description that the staff and line are two hands of the organization. ओके, आपका एक इंडिविजुअल को दो हाथ है, दोनों का अभी काम आते हैं, तो इसलिए एक ऑर्गेनाइजेशन का टू हैंड्स है, व्हाट, लाइन एंड स्टाफ. For the success of the organization, it is essential that both must work in cooperation and coordination. Sometimes they may clash, but it should not be a regular feature. Staff and line are complementary features of any organization. Okay, so hope you understood. And what are the distinction between the line and the staff? तो अभी डिफरेंस देखते हैं. अभी समझ में आ गया आपको, उन लोगों का रिलेशन समझ में आ गया. देन वी विल सी द distinctions and differences. The distinction between the two kinds of services, line and staff, is simple. One based on nature of the service performed by the different branches or units of department or agencies. Line agencies are those which perform the primary function which the organization is supposed to perform, while the staff agencies are those which conduct the managerial or housekeeping services. Okay, we already discussed all these points because line agency primary काम करते हैं, अथॉरिटी उन लोगों के पास है, they are taking decisions and लोगों के साथ डायरेक्टली लोगों के साथ काम कर रहे हैं. ऑल अथॉरिटीज़ आर द लाइन एजेंसीज, बट इन द केस ऑफ स्टाफ एजेंसीज they are working background of the organization. They are all supporting and advisory and housekeeping are the staff agencies. Okay. And major difference क्या क्या है? One is line agencies have the right to command.
while the staff agencies have the right to provide advice and assistance only. Okay, and second one is line agencies directly accomplish the objective of the organization, while staff agencies assist the line to fulfill the objectives. Okay, वो लोग पूरा assist कर रहे हैं. They are directly, line agencies क्या होता है, directly accomplish to the objective of the organization. एक organization का objective का directly involved है, but the staff agencies are supporting only. Line agencies make operative decisions. They are the decision making bodies, while the staff agencies render ideas for taking decisions. एक डिसीजन लेना तो आइडियाज़ चाहिए. ये आइडियाज़ कौन प्रोवाइड कर रही है, स्टाफ एजेंसीज प्रोवाइड कर रही है. देन उसके हिसाब से कौन डिसीजन फाइनली मेकिंग, लाइन एजेंसीज. ओके, while the function of the line are substantive, the function provided by staff are supportive in nature. One का एक substantive nature है and staff का supportive nature है. Line agencies bear final responsibility for results, while the staff does not take any responsibility for the final work taken by the executive. Of course, they are the line agencies are the executive body or decision making body. तो उन लोगों का responsibility होगा if decisions are positive or negative. स्टाफ एजेंसीज को उसमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. ओके, एंड the line agencies remain in direct contact with the people, while the staff agencies work behind, and the staff agencies do not have any direct contact with the people. Okay, and it's very simple. Hope you understood all the things. Okay, now you just go through both the videos parallelly, then you will get all the ideas about the line and the staff agencies and difference between them and the relations between them. This is the very important topic. You anyway, 1 or 2 questions are must from here, this topic. Okay, so if any doubts, you can write down on the comment box, and hope you follow the lecture, understood, and thank you.